So hi everybody, a very good evening to everyone. Just have to start this session and let me just explain all the things because most of the students are getting some problems like what is going to happen in this course and like that. Okay, so in this course we are just trying to see that कि हम यहाँ पे क्या करेंगे. Most of the thing is that we just have to do those parts which are basically associated with the numericals. Okay, those parts which basically associated with the numericals. Okay, and you will be surprised that sir in crystallography how many numericals they are going to come. Okay, so I will show you how the numericals can come in case of the crystallography. Basically क्या होता है कि numericals cases में mostly हम दो टाइप के numericals देखते हैं एग्जाम केसेस में. तो फर्स्ट थिंग इज द ट्रेडिशनल एंड सेकंड थिंग इज द नॉन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल केसेस में क्या होगा कि जो पहले से आते रहे, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि एरिया हाइपोथेसिस या प्राइड हाइपोथेसिस या फिर कोई दूसरा वाला कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, वही डीप स्ट्राइक वाला, दोज आर द traditional things and you have already gone through those things. Okay, what is the non-traditional thing? Then those parts are basically the key player. Getting my point ना everybody? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल है और मतलब कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है. तो दोज पार्ट्स ऑल्सो गोइंग टू कवर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोर्स इज दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू क्वेश्चंस, and you will see, and our old students they know how we provide those questions, and in this section we will cover with the live classes, and there is a program called GPP, Geodost practice problems, and those questions are basically going to be provided in parts. मतलब कि अगर ये crystallography का if we are going to provide 100 questions, 100 new questions, those are going to come in a phases or you can say parts. पार्ट 1 में आपका रह जाएगा 50 क्वेश्चंस, फिर पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस, एंड दी लार्ज सिलेबसेस जस्ट लाइक द पेट्रोलॉजी केसेस में क्या होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. गेटिंग माय पॉइंट? तो 5 पार्ट्स या 6 पार्ट्स, मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा इंक्रीज करेंगे एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. ओके, लेट मी जस्ट एडमिट सम स्टूडेंट्स, दे आर वेटिंग. Okay, so without wasting any time, and you guys already know that I am teaching crystallography since you can say 3 to 4 years. Okay, तो मैं 3-4 साल से ये पढ़ाते आ रहा हूँ, but the most important thing is that those parts we are going to cover today, and basically it will take 6 classes for me. Okay, but in one classes I just have to compress all the things, so that's why it might be clunky for you guys, so just try to cooperate with me because here we just have to discuss about the numerical portions. Okay, so without wasting any time I just have to start this session, and okay, so first thing is that in case of the crystallography, so we guys know what is the crystal. Those basically theory parts, because in order to start the numerical parts we just know some theory part, otherwise the things will be much more the clumsy. Okay, तो इसलिए थोड़ा सा theory part discuss कर लेंगे, then उसके बाद numerical parts देखेंगे, and at the end of the session we will see various numerical questions. Okay, new questions. Okay, so what is the crystal? 2 to 3 things you just have to mention. One thing is that it should be an solid, okay, and it should have some, you can say, unordered internal atomic arrangement. Okay, it is a solid having an ordered internal atomic arrangement. Okay, and internal atomic arrangement. Okay, so the thing is that this ordered internal atomic arrangement is basically going to give you the shape of crystal. Okay, so this is the basic thing, because the crystallography is basically the study of crystal, so that's why I just give you a comprehensive definition. So it is a solid which is having an ordered internal atomic arrangement, and this ordered internal atomic arrangement is basically going to reflect the shape of the crystal. That may be bladed, that may be flaty, that may be you can say. Okay, so there is 2 to 3 things. One thing is that motif. Okay, one thing is the motif, another thing is the lattice, and the third thing is the symmetry. Okay, these 3 things you just have to remember. In case of the crystallography, these 3 things is basically important. Okay, so what is a motif? It may be a, or you can say an atom, or you can say a group of atom. ठीक है, it may be
an atom or a group of atom basically connected through the lattice nodes. Okay, those terms you just have to remember because sometimes it can be asked in case of the MCQ or MSQ, but that is not our objective. Our objective is the numericals. Okay, so it may be an atom or a group of atom that is basically connected through a lattice nodes. Okay, and what is the lattice? Lattice is basically the pattern. Okay, the pattern which is basically going to be created by the repetition of the motif. Okay, I'm just trying to show you the images by which you can easily find out what is happening here. If you're trying to see, this is basically a sari, my traditional examples. Okay, so these are the sari you can see here. So what is happening here? So if you're trying to see, this is a Banarasi sari. Okay, so this is one motif. This is one motif. What is happening? This is one motif. Okay, this is one motif. Okay, you can say this is a motif, or you can say this is a motif, a group of atoms. Okay, so what is happening here? In these cases you can see this is another motif. Okay, so here repetition is in this direction, it is repeating. Okay, so it is going to create a pattern, and that pattern is basically called as lattice. Okay, I don't know why it is not functioning well, but I'm just trying my best. Okay, so this is called as pattern. So this pattern is basically called as lattice. And what is symmetry? Anybody? What is symmetry? Symmetry is basically the order. Dekho, I am just trying to go from the simpler to the complex method. First thing is the motif, an atom or a group of atoms. They are going to create a repetition pattern that is called as lattice, and those lattices are basically going to be combined in a order. Okay, or you can say order in arrangement. Okay, the symmetry is the order in arrangement. Okay, in arrangement and orientation. And orientation of kiska motifs. Okay, order and arrangement, order in arrangement and orientation of the motifs. Okay, basically our important point is this symmetry. Okay, our most important thing is the symmetry. Okay, so let me just go to this one. So what is the symmetry? We have seen these things. What is symmetry? Symmetry is basically the order in arrangement, and it is the orientation of the atoms in minerals. And those symmetry, or you can say those ordered, okay, they are basically going to create the properties, the optical properties or the physical properties. Okay, so in case of the symmetry, what is going to be happen? Symmetry are basically going to be divided into two parts. You guys already know about it. Okay, mostly JAM students, they are going to face some difficulties. GATE students, you guys already know about it. Symmetry cases mein, this is your translational. Okay, and another is your anybody point symmetry. You guys can just do the conversations. Okay, that will be much more interactive. Okay, this is your translational and this is your point symmetry. Okay, by which I can also know whether I am connected or not connected. So in this process, okay, translational symmetry cases mein kya hota hai? Anybody? This is the translation. See, what is the meaning of the translation? So translation ka meaning kya hai? It is the repetition. It is the repetition. Okay, translation ka meaning kya hai? Repetition. And in case of the point symmetry, there is also translation happens, but the thing is that the most important difference, that is basically this is the translation or repetition of the motifs through volume. Okay, and in these cases what is going to happen? It is the repetition of a motif around a point. Around a point. Okay, is it clear everybody? We'll see those concepts we are going to see in brief. Okay, तो हम उसको डिटेल में दिखेंगे. ये बस एक brief introduction है. Okay, so what is going to happen in case of the translation symmetry? Translation symmetry cases में in future we are going to see about the crystal lattices. Okay, there may be plane lattice, there may be space lattice. Okay, and there may be, और यू कैन से हाँ, यहाँ से स्पेस लैटिस से आपका जाएगा क्रिस्टल लैटिस. देयर टू टाइप्स, वन इज योर प्लेन लैटिस, अनदर इज योर स्पेस लैटिस. ओके, सो जस्ट लेट मी जस्ट अ सेकंड. ओके, एंड देयर विल बी crystal axis. Okay, and there is
crystal systems. Okay, so these things in case of the transitional symmetry. And point symmetry cases में आपका आ जाएगा reflection, rotation and inversion. Yes, there is three things. Okay, and what is going to happen in case of these point symmetry? If you are going to combine those transitional symmetry and point symmetry, they are going to give you to happen in case of the transitional symmetry and point symmetry. Yes, there will be crystal classes. एंड अगर हम उसमें और ग्लाइड प्लेन और स्क्रू एक्सिस ऐड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू गिव यू द स्पेस ग्रुप. दिस इज द होल क्रिस्टलोग्राफी in one slide. You can see this is the whole crystallography. I just want to put a image on your mind that what is going to be happen in crystallography and which parts are there in case of the crystallography. We just have to focus these parts. You just have to remember transitional symmetry में क्या होता है and point symmetry में क्या होता है. These things is basically the introduction part. Okay, so without wasting any time, I just have to move to those parts which are basically required in case of the numericals. Okay, so the thing is that we just have to start it from the transitional symmetry. The thing is that we just have to just a second. हाँ, transitional symmetry cases में क्या होता है कि it is called as the translational vector. Okay, it is called as translational vector. तो इसमें क्या हो रहा है, you guys can imagine. तो what is this? It is a motif. It is another motif. It is another motif. When those motifs are basically translating in an infinity direction. Okay, एक infinity direction में जब वो translating होते हैं या फिर repetition होता है at an equal distance, that is a, in this case it is a, then what is happened, there is a translation vector is going to create. Okay, the production of the translation vector is basically going to be happened by the repetition of a motif at equal distance. Okay, in a particular direction, and the same thing is basically going to be happen in these cases if there is another, okay, another direction, there will be repetition of the motif at an equal distance. अगर मान लेते हैं कि b, okay, in between them there will be an angle. In between them there is an angle that is called as gamma. Okay, इसको क्या बोलते हैं, gamma. And there is another alpha and beta, that is in case of the space lattices we will see. But in these cases what is happening, it is one axis or you can one direction. Okay, it is one direction. Another direction you can say it is two dimensional. Now it is called as plane lattices. Getting my point? इनको हम क्या बोलते हैं, plane lattices. And there is different types of plane lattices. And remember, these are called as the lattice nodes. क्या बोलते हैं इनको, lattice nodes. ठीक है, lattice nodes का मीनिंग क्या है, it is the intersection point of the translational vectors. Okay, you will see, sir, in these cases there is no intersection. Yes, there is intersection, but it is another translational direction. Okay, this is another translation vector. Okay, is it clear? And in this direction also these things. Now during this repetition there will be a, what is going to be happen, there is a pattern is going to be formed, and that pattern is called as lattice, and that lattice is known as plane lattice. Okay, and the symmetry part is much more higher. Now just starting from the lattice. Okay, तो ये होता है plane lattice, and there is different types of plane lattices. We just have to see, and the lattice will be look like this. The plane lattice after the repetition it is going to be look like this. You can see where are those, it will be look like this. Okay, so you can see there is B translation direction, there is B translation directions, okay, in this direction, and there is A translation directions. Okay, you guys already know, and the angle you remember. Okay, now just have to see there is different types of, first we just have to start it from the, कहाँ गया, plane lattices. Remember, from those I will extract the numericals. You will be surprised ki how the numericals can came from these things. Okay, so this is your plane lattices. It is called as square lattice. Okay, or you can say square plane lattices. In this cases the A is equal to B. Okay, A is the translation vector, A direction में जो translational unit है, the reputational unit you can say, and that is A is equal to B, and the gamma, okay, that will be equal to 90 degree. Okay, and it is called as square net.
Okay, the thing is clear. Okay, and this is called as unit mesh. Okay, what is the unit mesh then? The definition of the unit mesh, if anybody is going to appear for the GSI, the GSI is basically more focused about the definition. Okay, so what is the definition? It is the area bounded by the lattice nodes in plane lattices. You can just create those definitions by yourself by just putting the technical terms in proper position. Okay, okay, so this is the square lattice, square plane lattice, and this is your rectangular primitive. Okay, this P means it is primitive. Okay, this is primitive, and those primitive patterns, you can say this is one unit mesh, this is another unit mesh. It is basically going to create a pattern, and that pattern is basically, we know that is plane lattices. इसको हम क्या बोलते हैं? Primitive rectangular primitive plane lattices. Okay, इसका यूनिट में इसका ये इसका shape, this will be shape. Okay, and what will be the directions or what is the characteristic property of these things? A is not equal to B, the gamma will be equal to 90 degree, and इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं orthonet. Okay, and this similar things is going to be shown here in case of the, this is the most important one. Okay, and I have numericals also in this direction. ये जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो you just have to what is happening. Okay, just let here. Okay, so this is called as rectangular. C means it is centered. Okay, centered spelling. Okay, centered. Okay, so it is, if you just trying to see here, A is not equal to B. Okay, and the gamma. Okay, just remember in these cases there is a special cases. I told you what is happening here. Let me just explain you. Okay, so what is happening? This is your A and this is your B. Okay, so what is happening here? Those B, just it will be little bit longer like this. Okay, so it will be going to connected. This is your B. Okay, so distance will be B. This is your lattice node, this is your A lattice node, this will be your B, this O will be your A. Okay, and this one will be your gamma. What is happening here? If you're trying to see, this is a right angle triangle. Okay, and this part will be A by 2. Okay, if I'm just trying to see you cos gamma, what it will be? A by 2 divided by B. Okay, then cos gamma will be A by 2B. Okay, remember this equation. Okay, it will be A by 2B. Okay, and just remember the orientations also, in which direction the A is there and in which direction there will be B. Okay, okay, so this is called A is not equal to B, and in this cases the gamma will be not equal to 90 degree. Okay, the gamma is basically the relationship is here. Okay, and if you're trying to see, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं diamond net. Okay, remember the terms also, because it can be asked कि in diamond net what will be if this transition direction का ये अगर unit distance इतना है तो what will be the relationship between them and what is the angle in between them? You can just find out from this equation. Okay, okay, so let me just go further, and there will be much 5 plane lattices actually. Okay, we have covered 3, and there is, this is your hexagonal, this is called as hexagonal plane lattices. Okay, and as the name you can see, इसको हम कभी कभी ये भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं hexanet. Okay, जिसका जो net है, it will create a hexanet. Okay, and this shape you are trying to see here, so it is just like a rhombus. Okay, sometimes it can be also called as rhombus shaped. Okay, hexagonal plane lattices, or you can say rhombus also. Okay, and the angle in between them, can anybody guess what it will be? The gamma will be 120 degree. Okay, if this is a hexagon, you can easily find out what will be the direction in between the two transitional vector, that will be 120 degree, and A is equal to B here. Remember, in case of the hexagonal, आप थोड़ा याद करिए जो पहले पढ़े थे, तो what happens in case of the hexagonal crystal system? There will be A1, A2, A3 and not equal to C. Getting my point, na? A1, A2, A3, there will be 4 crystallography axes. Okay, those parts we will cover, but just try to I'm just trying to refine all the things. Okay, okay, and there is another one that is called as clinonet. Okay, उसको हम बोलते हैं clinonet. What are those? Okay, इसको हम बोलते हैं clinonet.
and the shape of the unit mesh, it will be parallelogram. Okay, and what is happening here, it is much more higher, parallelogram, and the relationship in between them is basically A is not equal to B. Okay, and the angle in between them, the thing is that, तो इस ये मोस्टली आपका किस में यूज होगा, मोस्टली आपका ट्राइक्लिनिक में यूज होगा इन पैरेललोग्राम केसेस में. ठीक है, तो इसलिए तो इसका नेम ऐसे ही तो थोड़ा सा ऐसे ही आया है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम, एंड इसको हम और भी बोलते हैं कि ओब्लिक रिलेशनशिप. दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन देम, दैट इज ओब्लिक रिलेशनशिप. ओके ओके okay, so these are the I just have to cover all the things. So what is happening here, so we have 5 plane lattices. Okay, and if you're trying to remember these things, there will be 4 fundamental shapes, 4 fundamental shapes of unit mesh. What is unit mesh? I just told the definition, that is the area bounded by the what is the angle, the lattice nodes. ओके, तो ये लैटिस नोड के बीच में जो एंगल कवर करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिट मेश. ओके, सो दीज आर द 5 प्लेन लैटिसेस. 4 कैसे हुआ? फर्स्ट थिंग इज द स्क्वायर, then the second thing is the rectangle. Okay, that maybe there is 2 types, one is primitive and another is centered, and there is hexagon, or you can say rhombus shaped, and there is one is a parallelogram. 4 fundamental shapes. See, in case of the JAM students, so it can be asked the difference between them like that in case of the 1 mark section, but that is rare. Okay, very easy one, you can easily find out, but I just want to tell you that it can be asked. Okay, it is easy for everybody, but you can just miss this one. So just remember the terms, or you can say just remember the digits, how many in this one and how many these things, they can just help you. Okay, so the plane lattices part is done, and I just have to tell you in case of the centered and ये cases में क्या होता है, in case of the centered and primitive, the primitive rectangle and center, ये इसको क्या बोलते हैं, what is going to be told in these cases, primitive cases में, this is called as diamond net, and this one called as orthonet. Okay, so what is happened in these cases, how many lattice, or you can say how many motifs are there? If I am just trying to ask you ki what is the total number of motif in case of the rectangular primitive plane lattice, how many? See, just a second, it is going to be make a pattern. So what is going to be happen here, so this motif, okay, so it is shared with this one and this one and this one. Getting my point? Then how much contribution towards this unit mesh, because this is our objective. Okay, तो ये हम इसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो how much portion, or what percentage, or you can say what portion, you can just say, so what portion you can say this is contributing 1/4. Okay, then how many motifs basically providing 1/4? 4, 1 2 3 4. Okay, then the total number of motif in case of orthonet, it will be 1. Get my point? If anybody is going to ask you what is the total number of motif in case of the rectangular primitive, that will be 1. Okay, but there may be 4 motifs, but every motif is contributing 1/4. Then 4 into 1/4, that will be 1. Okay, and in case of the diamond net, you just have to add another additional one. Okay, ये आपका complete कर रहा है, completely it is providing 100% contribution to this plane lattice. Okay, diamond net, in case of the diamond net, just remember those things are basically never asked anywhere, but it can be asked. Okay, हमको पता नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो it is basically what will be the total number of motif or total number of atom in case of the diamond net plane lattice, that will be 2. Okay, is it? So we just have to move to the space lattices. Plane lattices part is done. Okay, plane lattices basically क्या है, these are the 2-dimensional translational vectors. Okay, तो उनके बीच में एक एंगल होगा, एंड वो जो एरिया कवर करेंगे लैटिस नोड, उनको हम बोलते हैं यूनिट मेश. एंड देयर आर 4 फंडामेंटल शेप्स ऑफ द यूनिट मेश. वन इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंड देयर इज हेक्सानेट. ओके, हेक्सागोनल, यू कैन से रम्बस, एंड देयर इज पैरेललोग्राम. एंड प्लेन लैटिस केसेस में बस उसको थोड़ा सा अलग कर दो, डायमंड नेट डाल दो, ऑर्थोनेट डायमंड नेट डाल दो, रेक्टेंगुलर को डिवाइड कर दो, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर सेम. Okay, so we just have to move toward the space lattices. So what is space lattices? Space lattices are those, just like if this is your one plane lattice, okay, there is one above another, it is basically going to stack. Okay, तो ये इसके ऊपर ये एक स्टैकिंग पैटर्न
वो बनाएंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट इज द एडिशन ऑफ another डायमेंशन, एडिशन ऑफ another डायमेंशन, ओके। वन डायमेंशन एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली नाउ ए 3 डायमेंशनल, ओके। दैट्स वाई देयर विल बी 3 एक्सेस, ओके। वन इज योर, मोस्टली अगर हम उसका जो प्रॉपर डायमेंशन है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसको अगर देखेंगे तो कैसा होगा वो, इट विल बी लुक लाइक दिस, okay, it will be look like this. What is going to be happen here, you can see there will be directions like this, okay। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन, ये एक प्लेन लैटिसेस है, ठीक है, ये एक प्लेन लैटिसेस है। देन उसके बाद यहाँ पे और एक प्लेन लैटिसेस होगा। तो ऐसे 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 क्या हुआ, तो देयर इज ए एडिशनल डायरेक्शन, दिस इज एडिशनल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, ओके। तो पहले क्या था, ए एंड देयर इज बी, इन बिटवीन देम व्हाट इज द एंगल, दैट इज योर गामा, okay, and the stacking pattern is basically going to create another direction, that is your C, okay। तो माइनस नेगेटिव बी नेगेटिव ए, you guys already know that is the negative ends, okay। तो स्टैकिंग पैटर्न केसेस में तो there will be 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस। तो यहाँ से आपका क्रिस्टलोग्राफी एक्सेस आएगा क्योंकि यहाँ से यूनिट सेल आएगा, जो यूनिट मेस था इनके सबसे प्लेन लैटिसेस, तो स्पेस लैटिसेस केसेस में क्या बन जाएगा, यूनिट सेल, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, बी और सी के बीच में अल्फा, इन बिटवीन देम देयर इज बीटा, ऑल द थिंग्स आर बेसिकली मेंशन्ड हियर, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ओके ओके। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन देम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू miss those things because this is a numerical class, I don't have to explain all the theory parts, okay okay। so this is a space lattices। तो space lattices कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया कि if you trying to put a newspaper, okay, एक पेपर अगर रख दिए तो that is your 2 dimensional। तो वो केसेस में क्या होता है कि एक पेपर का एक पेपर रखेंगे तो after some times तो what will happen, it will gain a thickness, that thickness is basically another dimension you just have to put, okay। तो these are the space lattices। space lattices कितने टाइप के होते हैं, तो they are basically 14 types, okay। उसको हम Bravais lattices भी बोलते हैं। तो what happens in this cases, 5 plane lattices, okay। उसके साथ हम जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल करते हैं एक डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू गिव यू 14 Bravais lattices। Bravais lattices is nothing, it is an synonymous of space lattices, okay। don't confuse कि Bravais lattices क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। this is your space lattice। I am sorry for my handwritten because I don't know what is happening to my tab। in the next classes I will just improve all the things, okay, because I'm in a hurry, just started the fast class, so that's why the handwritten is basically distorted, okay okay। the space lattices part, हाँ, this is going to give you the space lattices। space lattices केसेस में क्या होगा, 5 plane lattices, 1 direction, and there will be 14 Bravais lattices। and if you're trying to see, there will be angle sizes, explained all the things। 14 Bravais lattices cases में तो what basically going to happen, they are going to give you 6 fundamental shapes of unit cell। unit cell क्या है, the volume that is going to be acquired by the lattice nodes, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो 6 यूनिट सेल्स, दो 6 यूनिट सेल्स आर बेसिकली नथिंग द 6 क्रिस्टल सिस्टम्स, ओके। यू गाइस ऑलरेडी नो आइसोमेट्रिक, ट्राइगोनल, आइसोमेट्रिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल को मिला के एक हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। आई डोंट हैव टू राइट हियर, ओके, यू गाइस कैन राइट हियर, ओके ओके। एंड if you're trying to see what is going to be happen in these cases, so what are the things that I'm going to explain, just a second। I just have to tell you what is the primitive one and what is the centered one, okay, how the primitive and centered one is going to be created। okay, so what is going to be happen here, see, थोड़ा सा मैं आपको ये कंसेप्ट बता दूं, फिर उसके बाद मैं मूव कर लूँगा डायरेक्ट, ओके। तो दिस इज़ 1 प्लेन लैटिसेस, ओके। तो इसके बाद हम जब एक एडिशनल क्रिस्टलोग्राफी डिस्टेंस, और यू कैन से ट्रांजिशन डिस्टेंस, दैट इज सी के बाद एक और प्लेन लैटिसेस यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। जब ऐसे करके फिर यहाँ पे एक सी में फिर पुट होगा, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल हो गया, ये एक अनदर यूनिट सेल, ठीक है। तो इन दिस केसेस what is going to be happen here, there will be primitive one। primitive cases में क्या होगा, at every corner of the unit cell we are going to get the motifs, okay। but how the body centered are going to be created, so in these cases, so there is one, don't think that this is your C, okay, this is not your C, this is your C half, okay।
तो जस्ट ए सेकेंड, हाँ, दिस इज वन प्लेन लैटिसेस. Okay, then after that another plane lattices is basically going to be translated at half C back, half C right and half C up. Getting my point na? See, this is your half C back, okay, this is your half C right, this is your half C up. तो उसके बाद आपका जो ये वाला जो रेड कलर वाला जो प्लेन लैटिस था, तो दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू दिस. ओके, देन दिस सेम पैटर्न इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. तो सी के बाद ये जो हमारा प्लेन लैटिस 1 था, तो इट इज गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड एज प्लेन 2. अगर ये मान लीजिए कि प्लेन 3 था, देन उसके बाद यहाँ पे आपका एक दूसरा वाला सेम कंडीशन इज गोइंग टू बी अप्लाइड. हाफ सी बैक, हाफ सी अप, हाफ सी सॉरी हाफ सी बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि ये स्क्वायर प्लेन है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो बट इन केस ऑफ दी हेक्सागोनल वो केसेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. बस ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के लिए याद रख लेना कि हाँ पे ऐसे दिस इज योर A, this is your B and this is your C. Okay, तो half A back, half B right, half C up. Okay, so in this way the body centered is going to be formed. This is your final result. Okay, so let me just tell you the primitive, body centered, face centered. Okay, primitive, body centered you guys already know. Now you just have to tell you the face centered. And in these cases what will happen, the primitive cases में the motifs are going to contribute how much? There will be 8 and the total number of motif will be 1. And in these cases 8 is going to contribute 1 by 8, that will be 1, and at the center it is contributing 100%, so that is going to give you 2. Okay, so these parts you guys already know. Okay, now just let me tell you about the face center. So what and just you can just put another points also. In case of the primitive, all the motifs at the center at the corner, and in these cases the same as primitive but additional motif at the center. Okay, so this is your face center. Okay, तो ये केसेस में क्या होता है, फेस सेंटर केसेस में, तो व्हाट हैपेंस हियर, तो फेस सेंटर केसेस में at every face, okay, at the center of every face you are going to get an additional motif. Okay, so the contributions is also different in case of the face center. तो primitive cases में जो होता है वो condition रहता है at every corner we are going to get the motifs, and at the center of it is the additional, at the center of each face you are going to get this one. Okay, so how these things are basically going to be happened, where you can see the arrangement here, there will be some rotational arrangement. Okay, you don't have to worry about that. Okay, then you just have to worry one thing about the numerical, is that the number of atoms. Can anybody guess what will be the number of atoms? First thing, primitive cases में 8 into 1 by 8 it is going to give you 1. How many motifs are the surfaces, or you can say faces? How many are the center faces? 1 2 3 4 5 6 number at the faces, and what will be the contribution? That will be 3. Okay, it will going to give you 4. This is the highest number of motifs in an unit cell. Okay, that will do. So in this way we can easily find out the motifs which are at the center of the faces. They are only contributing 50%. Okay, so okay, and there is another one that is called as base center, or we can say end face center उसको भी बोलते हैं. तो केसेस में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि सेम आज केस ऑफ द प्रिमिटिव बट एट द बेस. ओके, और यू कैन से एट द अपोजिट साइड. ओके, तो अपोजिट साइड में आपको और एक लैटिस नोड यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, अपोजिट साइड में आपको और एक लैटिस नोड यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, तो इन दिस केसेस व्हाट इज बेसिकली गोइंग टू बी हैपन, व्हाट विल बी दिस केसेस, यू कैन जस्ट राइट, एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स, एनीबडी, 8 into 1 by 8 plus anybody 2 into 1 by 2. In this case it will be 1, the total number of motif is going to 2. There is another one which is called as edge center. This is the miscellaneous one, you can say. मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि यहाँ पे आप बताइए कि कितना यहाँ पे रहेंगे. ठीक है, if there is sometimes, but in crystallography it is not possible. तो what happens, there is an unit cell, mostly chemistry cases में we consider. In that cases what happens, there will be cases sometimes we consider the edge center. ठीक है, edges में रहते हैं. Okay, I am not drawing here, otherwise you can count. Okay, so just let me know
एज सेंटर में मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि इट इज द सेम एज केस ऑफ द प्रिमिटिव, दैट मीन्स एट एवरी कॉर्नर द मोटिव्स आर देयर, एंड एज सेंटर में क्या होगा, एट द मिडिल ऑफ एवरी एज, at the middle of every edge. So now you guys can tell me, तो यहाँ पे 8 into 1/8 we guys already know this one for the primitive cases. Then how many numbers of, पहले ये बताओ कि एज में जो रहेंगे तो what will be the contribution to every unit cell? Just think about it. What will be the contribution? Those are the age. If there is a motive at the age, what will be the contribution to the unit cell? It is clear for everybody. I don't have to draw this one because there is another unit cell. Okay, ये आपका एक यूनिट सेल हो गया. Okay, and इस साइड एक यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल हो गया, and this is another unit cell. Getting my point ना? 1 2 3 4, fourth number. Now it is clear कि fourth 1/4 is basically the contribution. But how many numbers? It is clear for everybody. 12 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 because there is 12 edges. ओके, तो उसको यहाँ पे कितना हो जाएगा? देयर विल बी 13, सॉरी देयर विल बी 3, देयर विल बी +1. ओके, इट विल बी 4, बट इट इज़ नॉट इन आवर क्रिस्टलोग्राफी. ओके, इट इज़ इन केस ऑफ द केमिस्ट्री, क्रिस्टल केमिस्ट्री, एंड विच इज़ नॉट इन आवर कंसर्न. बट आई जस्ट टोल्ड यू कि इट इज़ एन असाइनमेंट कि जस्ट काउंट. अगर कहीं पे भी एज देखिए, कहीं पे भी पूछेगा तो यू गैस कैन काउंट कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोटिव्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर देयर. ओके, सो यूनिट सेल पार्ट इज डन. नाउ स्पेस लैटिसेस. स्पेस लैटिस मैंने आपको बताया था देयर इज 14 स्पेस लैटिसेस, बट फॉर योर कंसर्न लेट मी जस्ट टेल यू. तो ट्राइक्लिनिक केसेस में ओनली देयर विल बी प्रिमिटिव, एंड इन केस ऑफ दी मोनोक्लिनिक देयर विल बी प्रिमिटिव प्लस सेंटर्ड. ओके, एंड इन केस ऑफ दी ऑर्थोरम्बिक केसेस में आपका सब कुछ रहेगा. ओके, जितने भी ये आई मीन्स इट इज़ बॉडी सेंटर्ड, P means it is primitive, C means it is base centered, okay, F means face centered. Okay, don't confusion between the C and F. F means face centered. Face centered means at every phases, at the center of the every phases you are going to get one motif. Okay, C means base centered. At the opposite, okay, only 2. Okay, and this is your tetragonal, hexagonal, and there is isometric. Okay, 6 crystal system done. तो टेट्रागोनल केसेस में क्या होगा? देयर विल बी प्रिमिटिव एट एवरी केसेस, द प्रिमिटिव विल बी देयर. हेक्सागोनल केसेस में प्रिमिटिव एंड रंबोहेड्रल. ओके, आइसोमेट्रिक केसेस में देयर विल बी एब्सेंट ऑफ सी, दैट मीन्स बेस सेंटर्ड, अदरवाइज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. इफ यू जस्ट ट्राइंग टू काउंट इट विल बी 14. लेट मी जस्ट काउंट, देयर बी एनी मिस्टेक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 8 9 10 11 12 13 14. Okay, there will be 14 space lattices. Okay, you can just remember. Okay, maybe in case of the JAM 1 he can ask ki in case of the orthorhombic how many unit cells are possible. Okay, so these things you can just remember. Okay, so now I just have to come to the part where I just have to explain this part. I think number of atoms per unit cell, I explained all the things. Now triclinic space lattices cases mein there will be only one, that is your primitive. So how it will be look like? It will be look like this. Okay, so in this cases what will basically going to be happen? Can anybody guess what will be the प्लेन लैटिसेस? बिकॉज प्लेन लैटिसेस के ऊपर रहते ही आपका तो स्पेस लैटिसेस बनता है ना. तो दिस इज योर ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव space lattices. Anybody can guess what will be the plane lattices? What type of plane lattice is basically going to be translated to produce this type of space? That is your clinonate. Okay, that is your clinonate. Okay, तो clinonate cases उसको हम क्या बोलते हैं? Parallelogram. The unit masses are parallelogram. Okay. So these things, the net is clinonate and the unit mass is parallelogram. Okay, and this translation distance is basically अगर आप इसको देखोगे तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसलेटिंग एन ओब्लिक प्लेन लैटिसेस. इसको हम ओब्लिक प्लेन लैटिसेस में बोलते हैं. ओके, प्लेन लैटिसेस है ओब्लिक, नेट है क्लिनोनेट, यूनिट में से पैरेललोग्राम. ओके, एंड इन बिटवीन देम इफ देयर इज रिलेशनशिप यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट. ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, द एंगल्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ओके, एंड इन केस ऑफ द मोनोक्लिनिक, in case of the monoclinic there is two types. ठीक है, तो let me just first tell. monoclinic cases में क्या होता है? monoclinic cases में it is basically produced by rectangular
plane lattices. There is two types of rectangular plane lattices. One is your primitive, another is your center. The same thing is happened here. The primitive cases में क्या होता है? Primitive space lattices, a monoclinic under monoclinic crystal system, and centered cases में क्या होता है? Centered space lattices. Okay, but the translation distance is going to be vary. Otherwise, all the things are basically going to same. Okay, let me just show you these things. Otherwise, those images are only all are extracted from the Nesse book. Okay, you can easily find out there. There will be no problem. Okay, you can see this is your rectangular primitive. This is your rectangular primitive. This one is rectangular primitive, and this is your center. And same thing is basically going to be happen कि ये वही C डिस्टेंस में वो ट्रांसलेटिंग होंगे. ओके, और इसमें कुछ मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा दिखाना है कि कैसे कैसे होता है. ओके, एंड इन दिस केस ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक केसेस में क्या होता है, पहले मैं आपको एक एक करके थोड़ा दिखा देता हूँ, दैट विल बी मच मोर बेटर आई थिंक, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेसिकली पॉसिबल इन केस ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक. Why they are copying? Okay, this is your orthorhombic primitive. Orthorhombic primitive cases पे भी सेम रहता है, तो it is basically going to be produced by translating rectangular primitive lattices. Okay, so in this cases what is going to be happen? तो जो orthorhombic का original relationship है, A is not equal to B is not equal to C. Okay, but the angles in between the axes alpha and beta and gamma, it is basically equal to 90 degree. Okay, and in this cases the C is less than A and C is less than A and A is less than B. Okay, that means B is the longest one and C is the smallest one. This is the common relationship in between the axes in case of the orthorhombic. Okay, so these things you just remember. In case of the primitive, these things happen. You can see alpha, beta and gamma, there is 90 degree, and all the things you can just see. And in these cases, orthorhombic cases के बाद you can see the body center. तो body centered cases में मैंने आपको बताया था कि कैसे बैक जाता है, कैसे बाहर आता है. ठीक है, तो बैक कैसे जाएगा, हाफ बी राइट, हाफ ए बैक, हाफ सी अप. तो इन दैट केसेस देयर विल बी ट्रांसलेशन. ओके, तो देयर इज C distance. Okay, half C, this distance will be half C, and you can see half A right, half B back, and the same यहाँ पे केसेस में क्या होगा, यहाँ पे एक और बनेगा. ठीक है, एंड इसका C डिस्टेंस में यहाँ पे क्या बनेगा. तो इन दैट केसेस यू आर गोइंग टू सी ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट. अगर कोई बोलेगा कि ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोटिव्स आर देयर, यू कैन इजीली फाइंड आउट. इट इज एप्लीकेबल फॉर द बॉडी सेंटर, देयर विल बी 2. ओके, now the face center, this is your face center. okay, तो face center cases में आपका ये रहा. तो face center cases में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि face center cases में कहते हैं यहाँ पे. now it is C face center. C means base face center. okay, just remember the symbols P, I, F and C. F means face centered, at every faces, at the center of every faces you are going to get. C cases में क्या होता है, it is the base center. ओके, मोस्टली ये केसेस में यहाँ पे B और A भी लिखा जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि along the B axis there will be यहाँ पे. ठीक है, इट इज़ द B. अगर मान ले और कहीं पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ओनली इन दिस सेक्शन. दिस इज योर B. मतलब यहाँ पे लिखा होगा फेस सेंटर ब्रैकेट में कैपिटल B. ठीक है, देयर इज नोटेशंस ऑल्सो. इन क्रिस्टलोग्राफी द नोटेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है, इट इज़ नॉट दिस वन, इट इज़ नॉट दिस वन. अगर मान लीजिए कि ये फेसेस में है और ये फेसेस में, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस यूनिट सेल. ओके, दिस यूनिट सेल आई एम कंसिडरिंग. ये केसेस में इफ दिस इज द मोटिफ एंड at the opposite faces there is another motif, it is called as face centered, orthorhombic face centered, but यहाँ पे ये लिखा जाएगा A. okay, okay, so I think you guys can identify easily. okay, so this is face centered, body centered, primitive, and one thing is left, that is your face center. तो face, हाँ, ये केसेस में क्या होता है, anybody can imagine what is translating here. this is your centered rectangular. ओके, सेंटर रेक्टेंगल कर इजीली इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल. ओके, ओके, सो नाउ दिस इज योर फेस सेंटर. फेस सेंटर केसेस में उसको क्या लिखते हैं, दैट इज योर एफ. द शॉर्ट फॉर्म फॉर द फेस सेंटर दैट इज योर एफ. ओके, तो एफ केसेस में यू कैन इजीली फाइंड आउट. तो इसको थोड़ा सा अगर करेंगे, हाफ बी
राइट, हाफ सी अप, ओके, इसको अगर हाफ सी अप और हाफ सी राइट करेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट इसकी कौन सा प्लेन लैटिसेस वी आर गोइंग टू यूज हियर, वी आर गोइंग टू यूज द सेंटर्ड. इन केस ऑफ द MCQ यू कैन इजीली फाइंड आउट, बट मैंने इसको यहाँ पे क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस सेक्शंस, सो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ. ओके, एंड देयर इज हेक्सागोनल ऑल्सो. हेक्सागोनल केसेस में दो रहते हैं. ओके, वन इज योर primitive, simple primitive, another is your rhombohedral. The rhombohedral part is most interesting. Okay, rhombohedral part is most interesting. कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड. तो rhombohedral पार्ट में ये जो है इससे सिंपली दी हेक्सानेट. ओके, तो हेक्सानेट को अगर हम c डिस्टेंस में अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी हेक्सागोनल प्रिमिटिव. बट हेक्सागोनल rhombohedral जो कि ट्राइगोनल का प्रिमिटिव है, रिमेंबर हेक्सागोनल का प्रिमिटिव अलग, ट्राइगोनल का प्रिमिटिव जो है कि rhombohedral. इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिवाइड दोज क्रिस्टल सिस्टम्स इनटू टू पार्ट्स, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल, देन इट विल बी दी ट्राइगोनल प्रिमिटिव. अगर आप उसको कंबाइनली लिख रहे हैं तो दिस विल बी योर प्रिमिटिव एंड दिस विल बी योर rhombohedral. ओके, रिमेंबर. ओके, सो लेट मी जस्ट मूव टुवर्ड्स द rhombohedral बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये तो बहुत ईजी है. rhombohedral वन केसेस में क्या होता है, तो the translation direction is the most important factor. ठीक है, तो what is the translation direction or what is the amount we just have to follow while translating the plane lattices in order to create the trigonal primitive or hexagonal rhombohedral. Okay, तो what is the happen, what will be the up direction और c direction में क्या होगा, that will be the 1/3 c. Okay, is it clear? Just remember 1/3 c. Okay, and in case of this what will be the A translation direction. तो A केसेस में क्या होगा, it will be perpendicular to B. remember A केसेस में क्या होगा, it will be perpendicular to the B axis और B direction और B translation vector, and the distance will be 2/3 A cos 30. okay, तो what will be the A, this amount will be A. getting my point? A direction में हम इतना बैक ले रहे हैं. ओके, at an angle. ओके, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द B एक्सिस. यहाँ पे अगर B एक्सिस लेंगे इट विल बी परपेंडिकुलर. इज इट क्लियर? 2/3 A cos 30 along the A axis it is going to be translate. ओके, परपेंडिकुलर टू द B एक्सिस. ओके, एंड A हो गया, अप हो गया, एंड that much is important. ओके, B केसेस में it will be not that much required. ओके, okay, so hexagonal part is done. Now the tetragonal part, that will be the same thing, there will be not much different thing. Oh, half c back, half c up, and all the things are basically the same thing. Just a second. This is in case of the tetragonal. Okay, there will be tetragonal, there will be only primitive and body centered. Okay, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड केसेस में आपको पता होगा कि इसको अगर थोड़ा सा यहाँ लेंगे, हाउ मच डिस्टेंस इज गोइंग टू बी गिव एनीबडी, तो हाफ A2 राइट. ठीक है, ये कितना होगा, हाफ C अप. ये कितना होगा, हाफ A1. ये A1 A2 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज द रिलेशनशिप इन बिटवीन देम इज बेसिकली A1 इज इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू C. That's why there is A1 A2. Okay, simply A is equal to B is not equal to C. तो इसलिए A को यहाँ पर रिप्लेस करके A1 A2 लिख दिया है. ठीक है. Okay, so now tetragonal part is done. तो you just have to move toward the cubic cases में 3 things are happen. कौन सा है? Who remember those parts? In cubic crystal system, how many plane lattice, space lattices are there? 3. Primitive, cubic body center and face center. Face center means at every center at every center of the face. Okay, so this is the cubic primitive. You can easily find out. अगर square plane lattices को अगर हम यहाँ पे एक ट्रांसलेट करेंगे at a distance of C, we can easily find out the cubic primitive. body centered cases में थोड़ा सा हाफ A राइट, हाफ A बैक, हाफ A अप करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. ओके, बट इन केस ऑफ दिस वन क्यूबिक फेस सेंटर, इट इज़ इम्पोर्टेंट. यहाँ पे इस केसेस में क्या होता है कि हम इजीली
नहीं मिलता है। तो ये जो स्पेस लैटिसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्लेन लैटिसेस को ट्रांसलेट करके जो स्पेस लैटिस मिलता है इसको हम एक्स लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये जो आपका यहाँ पे दिस शेडेड पार्ट दिख रहा है ये केसेस में, बॉडी सेंटर्ड केसेस में, हाँ, तो ये केसेस में क्या है कि दिस इज योर यूनिट सेल। सो इसलिए हमने इजीली यहाँ पे रेप्लिकेट करके, यू कैन से ट्रांसलेट करके हमको मिल गया। बट इफ यू ट्राइंग टू सी द क्यूबिक फेस सेंटर, दिस इज योर यूनिट सेल। देखो, दिस इज आवर यूनिट सेल, ठीक है। तो ये केसेस में क्या होता है, तो यूनिट सेल का जो एक्सिस होता है, तो दैट इज योर आवर दिस वन इज डिफरेंट, ओके, दिस वन इज ए, ओके। अगर मान लेते कि ए केसेस में दिस इज योर ए एंड दिस इज योर एक्स, बट इट इज डिफरेंट। यूनिट सेल केसेस में इट इज along the a crystallography axis, so that's why it is equal। प्लेन लैटिसेस और यूनिट मतलब यूनिट सेल केसेस में यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल डायमेंशन लेते हैं, दैट इज योर एक्स। गेटिंग माय पॉइंट। जो प्लेन लैटिसेस रेप्लिकेट करके हम क्यूबिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे, वो केसेस में प्लेन लैटिसेस का जो डिस्टेंस होता है या फिर ट्रांसलेटिंग जो डायमेंशन होता है तो अलग होता है यूनिट सेल के डायमेंशन केसेस में, ठीक है, ये क्यूबिक फेस सेंटर्ड केसेस में। अदरवाइज ऑल थिंग्स आर इक्वल, जितने भी 13 हैं वो सेम होते हैं, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। कैसे अलग होते हैं, जस्ट ट्राई टू सी हियर। तो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस केसेस, हमने उसका कितना डायमेंशन लिए हैं प्लेन लैटिसेस का, दैट इज योर एक्स, ठीक है, दैट दिस विल बी योर एक्स, ओके। तो ये कितना बैक जाता है, दिस विल बी योर हाफ एक्स बैक। गेटिंग माय पॉइंट, हाफ एक्स, क्योंकि ये प्रॉपरली एक्स होता है ना, तो ये कितना गया है, हाफ एक्स राइट, और ये प्रॉपरली कितना है, एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेन लैटिसेस है। स्क्वायर प्लेन लैटिसेस केसेस में ए इज इक्वल टू बी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये केसेस में क्या होगा, हाफ एक्स, हमने इसका डायमेंशन कितना लिए हैं, एक्स, फुल का एक्स लिए हैं, ठीक है, तो इसलिए हाफ एक्स राइट, हाफ एक्स बैक, और ऊपर कितना जाएगा, दैट इज जो 0.70x। Is it here? Just see here. So what I'm just trying to tell you, this is a square plane lattices, okay. In this cases, this is your A, this is your B, okay. तो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, तो हमको पता है कि स्क्वायर प्लेन लैटिसेस में A is equal to B। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि हमको एक क्यूबिक फेस सेंटर्ड मिले, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, तो ये A B इक्वल है, इसलिए यहाँ पे x लिया गया है, ठीक है। क्यों ए बी नहीं लिए हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल दी थिंग्स, ओके। तो x लिए गए, तो इसको हम कैसे रेप्लिकेट करेंगे, इसको हाफ राइट लाएंगे, मतलब ये कितना डिस्टेंस हुआ, हाफ एक्स, फुल हो गया x, इसको बैक कितना लेंगे, हाफ एक्स, क्योंकि ये x है, हाफ एक्स बैक लेंगे और हाफ एक्स राइट लेंगे। देन उसके बाद ऑप कितना लेंगे, दैट इज योर 1/√2x। गेटिंग माय पॉइंट, √2x ऑप लेंगे। देन उसके बाद कैसा हो जाएगा, दिस विल बी लाइक ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, यू कैन इजीली फाइंड आउट, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये प्लेन लैटिसेस एक बन गया, ये एक प्लेन लैटिसेस, ठीक है। देन उसके बाद एट ए सी डिस्टेंस, दिस जो नीचे वाला जो मेन वाला था उसको हम यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दी क्यूबिक फेस सेंटर। इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट ट्राई टू फाइंड आउट, यू कैन इजीली फाइंड आउट, ओके। बट इफ यू ट्राइंग टू सी, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन, इनके बीच में डायमेंशन कितना है, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी इरेज ऑल दी थिंग्स। जो यूनिट सेल का डायमेंशन है, यूनिट सेल आपको दिख रहा है ना, जो शेडेड वाला पार्ट है वाला, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, जो शेडेड वाला पार्ट है, अगर हम ये वाला यूनिट सेल को लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर बी, बिकॉज ये केसेस में ए बी तो इक्वल ही रहेगा यूनिट सेल केसेस में, क्योंकि इट इज क्यूबिक, तो ये ए और बी, ठीक है। तो दिस पार्ट इज बेसिकली द सेम थिंग ना, इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? If this is your x, this is your y, this is your x, this is your y, is it clear? X y is the same thing, and now I'm just trying to tell you, if this is, ये मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया, ठीक है, this is your half x right, this is your half x back, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस चलिए हाफ है ना इसका, यहाँ से हाफ है ना यहाँ इसका, अगर हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मिल जाए, देन इसका 2 कर देंगे तो हमको यूनिट सेल का डायमेंशन पता लग जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे दिस इज ए राइट एंगल, हाफ एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये जो हमने अगर उसको क्या देते हैं, अगर स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है, तो स्टार का स्क्वायर ना, इज इट क्लियर? तो मैं स्टार रखता हूँ, ठीक है, स्टार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इसका रूट ओवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 रूट ओवर, ओके। देन उसके बाद इट विल बी डिवाइडेड बाई 2, ओके। देन रूट 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, x बाई रूट 2, ओके, 1 बाई रूट 2 x, तो ही इसका वैल्यू क्या होगा 0.70x, और यू कैन से दिस दैट मच डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा था, ओके। इज इट क्लियर? तो कैसे अगर कोई पूछा तो यू कैन इजिली फाइंड आउट ऑल दी थिंग्स, ओके ओके। सो आई थिंक इट विल बी मच मोर हेवियर फॉर यू गाइज टू दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत लंबा वाला क्लासेस है, इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 4 to 5 classes टू डिस्कस ऑल दी थिंग्स इन ए मैनर, okay okay. So let me just conclude this session here, just go to the question part, okay. Question part में थोड़ा सा देख लेते हैं, and remember the questions are basically from the translation symmetry are basically very ये rare हैं, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के ट्राई किया, and there are some questions are little bit advanced level and some are very easy level for the JAM students for 1 mark, okay okay okay. Rectangle primitive unit mesh bearing plane lattice has dash degree angle between two transversal vector, मतलब rectangular primitive unit mesh cases में what will be the angle, this is 1 mark, okay. This is for the JAM level, not for GATE level also, okay, because you just have to discuss all type of question, okay. This is 90 degree, it is clear for everybody, this is a direct question, okay. So what is the difference between the number of plane lattices and fundamental shapes of unit meshes? Number of plane lattices कितना है 5, and what are the different types of fundamental shapes? That will be 4. Then what will be the difference? Now this part just read carefully and just try to let me know. This can come either in GATE as a 1 mark or in JAM as a 2 mark. This type of questions are basically there in case of the GPP. And the crystallography is almost theoretical, so that's why it may be boring, but after that when the igneous and all the things will come, it will be much more interactive. Okay, so just see what is going to be happen here. हमने क्या पढ़े थे ये केसेस में? पहला चीज़ ये है कि it is a theoretical diamond net, okay. In these cases, the length of one unit along the B translational direction, मतलब ये कौन सा वाला डायरेक्शन को बोल रहा है, ये वाला डायरेक्शन को, B केसेस में, ठीक है, इट इज़ रिटन हियर। तो B केसेस में क्या है, इट इज़ 2 times, अगर मान लीजिए कि इट इज़ B, 1 यूनिट डिस्टेंस क्या है B, इट इज़ 2 times of the unit length along the A, तो दिस इज द डायरेक्शन ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ द ए, ओके, इज इट क्लियर? दिस इनके बीच में जो मोटी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है ए, तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस सेंटेंस इज एक्चुअली, ये जो फ्रेज का मीनिंग क्या है कि 2a इज इक्वल टू बी, ये बोल रहा है कि 2a इज इक्वल टू बी। नाउ कैलकुलेट द एंगल बिटवीन, दैट इज योर गामा ऑब्वियसली, 2 ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं इनके सब दी डायग्राम, सॉरी डायमंड नेट केसेस में डायग्राम हर बार आ जाता है डायमंड केसेस में, ओके। तो हम क्या करते हैं ये केसेस में, टिपिकल डायमंड नेट का रिलेशनशिप ये है कि इट विल बी a/2। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू दिस रिलेशनशिप, ओके, मैं ये रिलेशनशिप पाऊंगा बाद में, अभी इसको समझ लो कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप। दिस इज योर a/2, क्योंकि होल क्या था, a था, एंड दिस इज योर b, ठीक है। देन व्हाट विल बी कॉस अल्फा, क्या होगा यहाँ पे, सॉरी कॉस गामा क्या होगा यहाँ पे, a/2 अपॉन b, और यू कैन से a/2b, गेटिंग माय पॉइंट, a/2b, इज इट क्लियर? नाउ अगर हम b को रिप्लेस करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, b को अगर रिप्लेस करेंगे तो b क्या है, एज पर दिस रिलेशनशिप, एज पर द 2 है, ठीक है। देन कॉस गामा विल बी
2 into 2a. Is it clear? B is equal to 2a, na? The curve will be 1 by 4. So what will be the gamma? Cos inverse. Let me just check. You can always use the gate calculator. Okay. So it will be like this. ठीक है, अगर हम इसको अगर देखेंगे इट विल बी, यहाँ पे अगर 90 होगा तो इट विल बी लाइक दिस ऐसे. तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है कि a इज इक्वल टू 2a, यहाँ पे 2a नहीं दिख रहा है, इट विल बी b, बट एक्चुअली इट इज b बट 2a. ओके, सो ओके, इट इज इजी वन more question. Cases, what will happen? 8 into 1 by 8 and plus 1, that will be okay. This one, it is easy one, just only the basic data. There will be no analytical skills required to do this one. The difference between the number of total motifs in case of the face centered and body centered unit cell, it is not unit mesh. Okay, तो unit cell cases में, body centered cases में क्या होगा? It will be okay, just think about it. It is 2. फेस सेंटर्ड केसेस में कितना होता है? That will be maximum number, that is your 4. Then what will be the difference? That will be 2. Okay, this one. Okay, the time is already 9:20. So I have two questions, this one and this one. Just take a screenshot, just try to do this one. मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ये कैसे करना है. Then we'll meet at the next class. Otherwise it will be much more higher for you guys to think, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा नहीं तो. ठीक है, just take a screenshot. Okay, so you guys taken the screenshot. So I just have to conclude this session and thank you so much guys. Just try to solve these two questions. Let me just share again, this one and this one. Okay, all are the 2 mark questions and little bit creative one. Okay, just try to think and read questions carefully and go through images also. Don't try to मतलब थोड़ा सा वहाँ पे स्केल में मेजर मत करो कि ये ऐसा गया ऐसा गया. इट मे बी डिफरेंट बट ओनली द ऑब्जेक्टिव इज गिवन देयर इन द इमेज. ओके, so thank you so much guys, have a good night.